Guys, we will start in another 2 minutes, maybe. Both the both the IITians have joined. Harsh and Astha. Both of them have joined, and I am just waiting for you all to, as in the students to join, and then we will begin. Another 2 minutes. Just to let everybody know, we are live streaming this session on YouTube as well. And today we have Harsh and Astha, as well as Neha ma'am from Indore. Neha ma'am and I will be hosting the session, and Harsh and Astha will be taking care of all the doubts or queries that you have. Along with that, they will also be sharing tips for the examination that you have tomorrow. One tiny request. When asked, please switch on your video and mic, and otherwise do not switch on your mic. We will be having a Q&A session. उस सेशन के टाइम पे I request you all to come up, ask whatever questions that you have, either using the chat box or by switching on your mic and then saying the question. First, you need to raise your hand, and then you will ask the question when asked. For example, Chahat wants to ask a question. She will raise the hand. I'll say, Chahat, go ahead, and then Chahat will answer. So, Neha ma'am, shuru kare? Yes, ma'am, go ahead. Great. There's still people coming in. All right, ma'am, आप अगर आपको थोड़ा मिले टाइम तो keep adding the admit देते रहना बच्चों को, ठीक है? Sure. So Astha and Harsh, you both are here, right? Hi, Ashmit ma'am. Yeah. Hi, कैसे हो Harsh? Bus. Yeah, all good. How are you? Great. So good to see you after so many months, years, whatever. Yes, ma'am. Yeah. So I am in campus right now. So finally left Delhi after so long. You must be having online classes, right? Yeah. Online class, but we are in campus. We can use the labs sometime and all. So it's happening, yeah. That is great. ठीक है. Astha, you are here? Astha? I think I'll ask her to switch on. She's there, ma'am. I'll just reach out to her. Achha, she's joined again. Some issue maybe. Astha, hi. Okay, there's some issue with her laptop. She'll be rejoining, I think, again. Okay. So let us begin with Harsh.
Harsh, why don't you introduce yourself? क्या Yeah, कर रहे हो? hi. Of course, I've given them a brief कि आप अभी Sure. MDES कर रहे हो IIT हैदराबाद से, but other than that, give a little brief about yourself. Sure. Yeah. So as you know, all know, like my full name is Harshaj Kaun. I am from basically Gwalior, Madhya Pradesh. And then I went on to complete my graduation in Bachelor of Fine Arts. My specialization was visual communication. So I completed from Delhi University College of Art. 4 years I was there, and then I literally decided to do this MDES. So in 2020 I gave the exam, but I didn't succeeded in that. So I was working as a freelance graphic designer, and whole of the year I literally was involved in visual design stuff, interface design, various photo shoots. Everything was like related to design I was just doing, and yeah, I was living such a good life. But yeah, I literally wanted to just do something good and have this kind of formal kind of education in my life. So I studied for this, and then in 2021 like I cleared with rank 14. So now I am here finally. 2020 में Yeah, एग्जाम दिया था, कौन से एग्जाम दिए थे 2020 में? 2020 में I gave NID, I gave NIFT, I gave this CEED, and I cleared in NIFT, MDES, I cleared NID also, but it was in photography design, so I was not sure enough for that, so I declined the offer. And then so yeah, kind of like it I remember. happened. Yeah. Yeah, you remember. Yeah. So ma'am guided me, like ma'am really guided me throughout the preparation, and it was really amazing because I didn't know a lot of things that time, like proper sketching and what you can like the smartness to attempt the paper. So she guided really well. And then in 2021, but let me mention that he is from the Gond art family that you know about. Harshraj Gond to us family se hai, and right. he did clear Right. NID and NIFT. And I think मेरे दिमाग में ये था कि आपने एक साल निफ्ट करके फिर उसके बाद you went to that's what I was about to tell you. So in 2020, then for a safer side, I joined NIFT MDES. But like IIT is IIT, and I had this in my mind that I have to clear it because a lot of my seniors from my college are there. They're doing really good in their life, and I just wanted that kind of name, that IIT, and I just wanted to be here. So I studied hard for this, and in 2021, with all the preparation I did in 2021, I applied again in 2021, and then I cleared it finally. So you prepared alongside NIFT? Yeah. So in 2020, when I was in NIFT MDES in Delhi campus, I was preparing for this CEED exam. So side by side, I did it somehow. I don't know how, but yeah. Yeah. All right, great. So like I remember जब आपको you had to choose disciplines, photography, design, look क्या मैम, ये look क्या मैम, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैम. But चलो अच्छा है, like that you finally there. तो अभी IIT में MDES में कोई specialization है आपकी? So it is like there are subjects given and you can choose your specialization. So like there are courses, graphic design, AI interface design, and there are photography, filmmaking, and there are various courses available. You can choose it. And the courses runs in like a 3 credit, 4 credit. So it's like a huge amount of time where you can develop your approach, you can develop your concepts. Teachers are approachable all the time. You can just go to them, you can just ask them about your query. So it is really very easy to go through over here, and there is no restriction over here. You can just choose your subject and just go with the flow, and you just have to tell the concept. The teacher will craft it for you, and then you can go ahead like that. So my major is like interaction design and graphic design, mix of both. Okay, great. जब आपने अपना 2019 में प्रिपरेशन शुरू किया आफ्टर योर BFA, right? You started preparation for NIFT and NID CEED. तीनों exams आपने दिए. Definitely. You got into NIFT and NID. You did not clear CEED, but एक साल बाद CEED आपने clear कर दिया, right? तो आपका जो of course the pattern of MDES in all 3 colleges is different. So right now we have students here who are appearing for UCEED tomorrow specifically. UCEED and CEED, both masters and bachelor's level students दोनों हैं इधर. Apart from that, many of these students are also appearing for NIFT 6 Feb को. NIFT MDES, right? NIFT MDES and NIFT मतलब दोनों हैं, bachelor's level के भी हैं, masters level के भी बच्चे हैं इधर. So what would your suggestion be to them for college specific
entrance preparation, because the pattern is very Yeah. different. Okay, so my time when I gave this NIFT MDES, there was this common paper, and I think because of my rank was 7, so I got in Delhi. It was very simple. You have to be like a topper in that rank, and if your rank is very much like good enough, then you'll easily get the Delhi campus. So it runs like that. Like in my case, it happened like that. But for the preparation, I literally followed a pattern. There was some GK questions over there. There were mathematics. So I was preparing all throughout all of them, and there were some other design and drawing questions. So I was just preparing all of them, and it keeps happening and happening. And then, yeah, I was just, because I was attempting all your questions which you gave us, like the sample papers and the test you conducted all over the month. So that helped a lot. And in sketching also, I think in NIFT, I really did a great job in sketching, because I got a lot of time for sketching. I think 4 hours or something, and I was doing it little by little, sketching, and I literally made like a good sketch over the poster and other things, animating all the storyboards. So it went well. It went well. That's why I think because of that I got 7th rank and I got in. Yeah, so I think a lot of students over here are with that Yeah. mindset कि मैम हमारा ये weak है, हमारी English weak है, या हमारा maths weak है, या reasoning weak है, या GK weak है. Like in today's GK class only I was talking कि अभी अपने drawing पे focus करो. Work on your strengths basically. अभी कुछ basic उठाकर, शुरुआत से उठाकर करने का कोई फायदा नहीं है. Work on your strengths. Yeah. So like practice is the key is what you're telling, correct? Definitely. Great. And when paper is near, so then one should just start revising all the topics you have covered. Don't go into depth. It really doesn't help a lot. Whatever you have written, just go into that, revise it, and for the sketching, just quickly scribble things, and you just get a hand on that particular shape or form, and just you get a lot of time for NIFT exams. Just go with like pencil colors are the best thing to get you in the paper, and then just do it like with the good amount of sketching. Did you have the drawing question in CEED? Yeah. हाँ नहीं, वो अभी recently introduce हुआ है ना, but इसलिए पूछ रही थी मैं. Oh, the pattern has changed again. No. पहले नहीं हुआ करता था drawing का part. But go on. Okay. Yeah. Okay, but I think in UCEED it's not there. But I think it's came now. Ab hai, yeah. But in CEED part A is there. So first you have to clear the part A with the kind of cutoff you get, and after clearing the part A, your copies will be checked for part B. So in part B, you have to do a great job, because I still remember I scored theek-thak in my part A, but in part B, I scored 65. So I think that... Can you describe a little what part A and part B are like? Yeah, sure. So part A is very much, I would say like, see, pattern changes every year. So what I had a view on my like previous year question paper, so I get this view that it is very much related to art, it is very much related to design, and there is some stuff from mathematics, numericals kind of things coming. So, just to distract you from that point of view. But when I attempted my paper in 2021, it was way too tough. I didn't know that there were like in starting, there were NAT, numerical answer type. And I just attempted 2 of them. I didn't know all of them because it was way too tough. It was way mechanical, and I'm not from that mathematics kind of background. So, yeah. So I had this strategy in my mind, and I just moved on with that. Like I know that I don't know this NAT questions. Just move on. So I just moved on with this MSQ multiple select. And in multiple select again, they put a question in such a way that it's so confusing that you will not able to understand that, okay, this 2 can happen or ek hi hai, or 3 hai ki 4 hi hai. So it was again difficult, but 1 got wrong and 3 of them I got it right. And then like in MCQ, it was the major point for me. Like in MCQ, there are like hell lot of questions came like about from design, from art, animation, photography. And I solved it, like lots and lots of things I solved it. So I think my design education, like the bachelor, helped me in that. Otherwise, the paper was quite tough in 2021 because it was way too technical, I would say. And I think for this year, it can be technical, but it cannot be. Like it totally depends. So one has to be like really quick. And if you don't know that particular question, just leave it. Just move on with next, because time is running like tick, 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 tick there. And you have to solve it like very quick. And you should write all your
answers. If you are sure enough that it is right, just write it. Like you can point, it is correct, and just write it. Like it is of 3 marks, then it is correct, just write it, because you have to count your like a cutoff. In your head, it has to be counted, because you don't know that you have corrected all these things or not. Because for part B, you have to qualify it for the part A. First, you have to qualify it in part A, that then your copies will be checked for part B. So you have to have that mindset. So I made this strategy, and then I think that worked for me. So basically, it's okay for some of the students to not be at, very skilled in every part. They can be skilled in certain parts, and they can clear the exam. Totally. So in my case, I am very much, I am very much skilled in design. I'm very much skilled in art forms, patterns, animation, photography. So those questions I did it right. And all the numericals, I just left it. Like, I don't know, bhai, mujhe nahi aata hai. Just leave it. And when I was solving that paper, I literally got demotivated, and I was just having in my head that ab nahi hoga mera. Ye bhi saal gaya mera. So ye to bahut tough hai. But after that, when I did that writing, I jumped to that MSQ and I solved it 2 correct answers. And then I jumped on the MCQ. Then I solved it major amount of questions. Yeah. Mm-hmm. And I think the last year papers cutoff was quite less because the paper was tough. Yeah, sometimes what happens is like you are also facing like you were facing issues with certain sections. Yeah. A lot of students also face issues with sections. It's like everybody is going through the same situation, be it NIFT, NID or UCEED, be it any exam for that matter. Right. Sub same situation mein, right? Definitely. So आपका जो पहला साल आपने दिया राज और second year you gave, what was the difference in the pattern or preparation or what? Yeah, so in 2020 the paper was way too easy, and I didn't clear just because of this mistake that I don't know what is MSQ, multiple select, and I was just like putting one answer on that. MSQ is like multiple selective, and I don't know the meaning of that. So that's how like I got negative marking, and then it was not clear. But it was way too easy in 2020 till 2020, and the last year papers was quite easy. But in 2021 there is a drastic change. There is a mechanical things coming and mathematical point of view that came. So yeah, pattern changed, definitely pattern changed, and there were questions came from very much mathematical point of view in 2021. In 2020, there were questions very easy, like from the color combinations to animation, and then from typography, you have to describe the font, or you have to just put out the same font or something, questions like that, and choose the difference. So these questions were quite easy. But in 2021, there was a major difference in that. But yeah, in MCQ, the questions were quite easy. Some of them, like silhouette design or something like the animation and all. So if you know these things, and if you're good in mechanical, then still you can solve the paper really good. So it totally depends on person to person. It's very subjective. Yeah, because you have a background of BFA as well. So design thinking or design knowledge, awareness hai abhi. And at the same time, it's like we can't really predict what the this year will hold. Definitely. Will it be? Maybe it will be easy for you. Maybe it will be difficult for somebody else. Definitely. Or it could be anything. All right. So मेजर आपका जो डिफरेंस रहा प्रेपरेशन में और पेपर को समझने में, तो एक काफी तो मेरा एक जनरल एक आइडिया आता है बच्चों के साथ कि इन लोगों को पता नहीं होता पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू फॉर्मेट फॉर एवरीबody. It's a very new format, and with the clock on the screen, it makes you even more nervous, which is very natural. Totally. So that's what I'm saying. Like they gave the paper, A4 paper, and I have my pen. Like I just want to give this tip. Like just take it very less stationary. Just taking all your poster color and the whole hell lot of pencil color, like big, nothing works there. Nothing. Time is just like, vanished. Like, oh my God, kahan gaya bhai, kya hua? So I had this paper and the pen, and I was just noting question 1 cross, because I don't know that. Question 2, okay. Then whatever I am good in, like I know that this is gonna be correct. This question I know, and it's gonna be correct. So I'm just writing my marks over there. Like 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. So from there, I get this point that I will clear now part A, because I'm confident enough in this. And then on part B, it was like quite easy for me.
So I knew that I already told my friend that I think part A is cleared. Mine, yeah. And yeah, so it happened like that. So one should follow. I'm just saying it worked for me, and I think it can never work for somebody else, or I don't know. Like everybody has their own point of view. They can do their stuff. So, but just be open in the paper, and just solve it like with an open mind. Don't stress like. ओके जैसे हर्ष बात आती है, अभी आपने स्टेशनरी का मेंशन किया. एनआईडी के एग्जाम के पहले, यूसीड के एग्जाम के पहले, अभी भी, और निफ्ट के एग्जाम के पहले भी क्वेश्चंस आए हैं ये ओवर एंड ओवर अगेन. मैम ये लेके जा सकते हैं, मैम वो लेके जा सकते हैं. Right. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव दैट मच टाइम. व्हाटएवर यू आर मेकिंग, बी इट अ प्लेन ड्राइंग, make it perfectly instead of adding. I'll just tell you, because whoever checking the paper, the examiner, he also know that it is just 3 hours and koi kitna kya bana lega, and there is a limited amount of time. You have to just make it a good right amount of sketch over there that it is understandable. You don't have to make it like like Michelangelo's drawing and kind of like that good amount of shading and all. You just have to put it in a very good manner. What I did, I put it in a very good manner. I didn't made it like very good sketches and kind of, but yeah, it was looking good. Like when you see it, you can say like, wow, nice, like that. So, but it was, I was communicating with my ideas, and just like in the paper, whenever you're writing it like that, like if you're putting it with the pencil or something like that, you have to describe something. Just write it with the good handwriting. If you're just scribbling it all over the place, like there will be a marks deduction in that. So whenever you're sketching, whenever you're putting your ideas, just even if you're writing it, just be legible with that. So I get like, guys, this is coming from a person who is already good at sketching, who is already good at ideation. Agar wo bol rahe hain, to please I tell you to listen to his advice. Be clear with your ideas, clear with your drawings, clear with your text, and presentable hona chahiye. That's it. Definitely. So इतना, again, it is not a BFA or a MFA exam जिसमें आपको बहुत skill दिखानी है. It's not a skill based, it's an idea based exam. So this, तो ये तो हो गया. चलो थोड़ी बहुत हमने सीड की बात कर ली. मैं थोड़ा सा आस्था से बात करती हूँ. Yeah, definitely. You again. Sure, ma'am. Sure. Astha, you ready? Yeah, I'm ready. Hello. एक मिनट रुको. Hi, how are you? Hello, I'm good. How are you? I am great. So मैं थोड़ा सा भी बोलूंगी. जैसे हर्ष है, हर्ष belongs to the family of an artist. Yeah. On the opposite side, Astha was doing statistics or mathematics. I was She was doing maths honors. Yeah, she was doing maths honors from Delhi University, and the background of both of them are quite different, and दोनों same batch के है. 2019 में मेरे साथ साउथेक्स में थे दोनों. एंड उसने, हर्ष ने 1 साल के बाद निफ्ट करके करा, फिर उसके बाद, एंड इधर आस्था ने सेम ईयर, आई थिंक आस्था गॉट इनटू एनआईडी, निफ्ट एंड एवरी अदर प्लेस, राइट? यस. अब बताओ आस्था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल एवरीबॉडी अबाउट योरसेल्फ. ओके, सो देयर वाज दिस थिंग कि पढ़ाई में स्टार्टिंग से अच्छी थी, तो होता है ना पेरेंट्स का कि अच्छे से मतलब अच्छे कोर्स में जाओ और पढ़ाई और ये, बट एक खुद का होता है ना कि आर्ट की तरफ बहुत ज्यादा था. बट ठीक है, ऐसा नहीं है. मैंने स्कूल के बाद एंट्रेंसेस सारे दिए थे, निफ्ट एंड ऑल सब दिए थे. उस टाइम पे मेरे को यूसीड का आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है. बट आई वाज लाइक ठीक है, निफ्ट है, बट मेरे को इतना नहीं था कि फैशन डिजाइनिंग या ये वो करना है. बट येस, आई वाज इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड टेक्निकल स्टफ. मुझे दोनों ही चीजें अच्छी लगती थी कि साइंस भी अच्छा लग रहा है, आर्ट भी अच्छा लग रहा है. बट हो क्या रहा था कि एक फील्ड देखती थी तो इधर लगता है कि यार इधर तो सिर्फ पढ़ाई है, फिर निफ्ट देखती थी तो यार इधर से ये इंटरेस्ट ही नहीं है ना, कोई कॉमन चीज मिल ही नहीं रही थी मेरे लिए. तो आई जस्ट एंडेड अप कि अब चलो ठीक है, मिल गया, जहाँ एडमिशन मिल गया. फिर एक दिन ऐसे ही मैंने कहा यार ऐसे कैसे. रुको, लेट मी स्टॉप यू हियर. सो you were pursuing mathematics honors at Delhi University, and you came to me telling कि मैम मेरे को बी डिजाइन करना है, मुझे यूसीड क्लियर करना है, करेक्ट? यस. एंड लाइक आई कॉन्टिन्यूसली आस्क्ड यू, 2 बार मैंने आपसे पूछा मास्टर्स के लिए चले जाओ, कोई बात नहीं, अभी बैचलर्स कंप्लीट कर लो अपनी, करेक्ट?
You Yes. said कि नहीं मैम मुझे बैचलर्स दोबारा करनी है. So how did that come into play कि आपको अभी कोर्स करते करते you are thinking of applying for exams? Firstly, I was not sure कि मतलब तो ये वाला field is like एक चीज नहीं है. There are lot of stuff in there. अब क्या होता है, सामने वाला बोल के चला गया कि हाँ ठीक है इसमें ये होता है उसमें होता है, बट हर इंसान अलग होता है. आई मीन जब तक खुद से एक्सपीरियंस ना करो उस चीज से, मतलब मैं सिर्फ सामने वाला जो बोल रहा है उस पे कोई अपना ओपिनियन नहीं दूंगी जब तक मैंने खुद उस चीज को पढ़ा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है. क्योंकि लेट्स फेस इट, किसी को कोई चीज पसंद आती है, किसी को कोई चीज पसंद आती है. और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम थी कि द डिग्री आई वाज परसुइंग वो मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं आगे जाके B.DES कर सकती. तो हाँ मेरे को था कि नहीं, अब मेरे को किसी की बातों में आना ही नहीं है, मेरे को खुद से ही जाके करना है सब कुछ, सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है. और UC'd B.DES over Which here year is were you in when you applied came to Pahel? first First year. first year I was in, Hmm. yeah. Like I guess UC'd की eligibility is also कि 12th के बाद like only 2 attempts you could do. Hmm. So yeah, so basically then when I was studying about UC, so it was like कि यार इसमें सब मतलब इसमें मेरे को जो चाहिए like कि मेरे को सब कुछ आ रहा था कि साइंस भी आ रही है, आर्ट भी आ रही है. इट वाज लाइक बट फिर वो ही कंफ्यूजन एक और कि अरे इतने सारे फील्ड्स है, अब कहाँ जाए. तो मास्टर्स में फोन रख दो सामने. नहीं जग रख नहीं सकते नहीं वरना. चलो कोई बात नहीं. हाँ जी बोलो. तो यही था कि खुद से एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स थी. अब एक जो चीज हम लोग एक्सपीरियंस करके हम लोगों को पता चलती है वो किसी सी बातों से और किसी और फिर मैं नहीं चाहती थी कि मैं मास्टर्स में कोई भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करूँ, कि मैं फिर से जाके उसी कंफ्यूजन पे बैठ जाऊँ कि अब क्या आगे करना है. सो आई चूज कि नहीं मेरे को बैचलर्स करनी है. और फिर लाइफ ने मेरे को एक चांस दिया था, सो आई वाज लाइक कि व्हाई नॉट, मतलब खोने के लिए कुछ है नहीं तो व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट गेट इनटू इट, करते हैं. एंड आई स्टिल रिमेम्बर द डे आई केम, आई वाज लाइक मैम से मैंने एक साल में कि मैम हो जाएगा ना, मैम मेरे को करना है, हो जाएगा ना. आई वाज लाइक दैट. तो या बट And मतलब you also gave NID and NIFT both along yes, with. but I was basically preparing only for UC, but yeah I gave for NID and फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर इसलिए भी नहीं हुआ था कि ऑल ऑफ अस नो हाउ टू ड्रॉ गुड स्टफ एंड ऑल, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देखकर बना रहे हो. देयर आर सब टेक्निकल थिंग्स इन ड्राइंग टू, लाइक एक ह्यूमन बना रहे हो तो आप उसमें भी प्रोपोर्शंस होते हैं और ये सब. तो बहुत सारी चीजें थी. लाइक आई वाज रियली वीक एट कॉम्पोजिशन. लाइक मैं अलग अलग चीजें बना लेती थी बट एक साथ उन्हें ड्रॉ कैसे करना है, एक साथ लेकर रहना है, आई वाज रियली वीक एट दोस. तो मैं एक दिन तो फिर सर के पास गई, मैंने कहा सर मेरे को सब आ रहा है बस यही नहीं आ रहा है. तो फिर सर ने एक दिन बस मेरे को पूरा एक हफ्ता वो ही चीजें करवाई. तो उसके बाद काफी इम्प्रूवमेंट हुआ और वही चीजें जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं नहीं कर पाई थी नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोज वर सॉल्व्ड एंड तो हो ही गया. एवरीथिंग वाज फाइन. Your first attempt was before coming to Pahel कि after coming to Pahel? बिफोर कमिंग जो आपने अपने 12th के बाद immediately दिया होगा, right? इमीडिएटली आफ्टर 12. और सेकंड अटेम्प्ट आपका ये था अभी आने के बाद? हाँ ठीक है. सेकेंड अटेम्प्ट बहुत दिन पहले. लाइक यूसीट का तो फर्स्ट यूसीट तो मेरे को पता ही नहीं था कि होता है. हाँ. NID and on my own. Okay. When you wanted to, हर्ष का तो like we know उसने BFA applied में किया था and then he wanted to get into graphics again or UI UX. But about you, like when you said you wanted to get into design, which stream of design you wanted to pursue? Likewise I said मेरा मेन रीजन बैचलर्स करने का यही था कि मेरे को इतना पता था कि मेरे को इस फील्ड में जाना है बट आई वाज नॉट श्योर कि किस फील्ड में जाना है. तो मेन मेरा पर्पस यही था कि मैं किस बैचलर्स लेने का कि मेरे को खुद से वो एक्सपीरियंस हो जाए, खुद से मैं सारे फील्ड्स को एक बार अच्छे से एक्सप्लोर कर लूँ, उसके बाद ही कोई अपना डिसीजन. Like when I started with my bachelor's, so मेरे को था कि मेरे को प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी है. बट अब जैसे जैसे हम लोगों का कोर्स था मल्टी डिसिप्लिनरी, तो लाइक हर वीक नया प्रोफेसर आता है हम लोगों को पढ़ाने, हर वीक नया प्रोफेसर आएगा तो अब मेरे को कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट आ रहा है.
पहले मैं शुरुआत इससे ही की थी, जब मैं व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई वाज विद अ माइंडसेट कि मेरे को प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी है, बट अब जैसे पढ़ती हूँ, कोर्सेज आते हैं और काम कर रही हूँ, लाइक प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं एक दो कॉलेज में, तो आई एम अब पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं, कम्युनिकेशन इज बेटर फॉर मी, तो या So you're inclined towards communication now. That's great. You can get in touch with Harsh. He'll help you figure out the masters. Okay. And I am trying my hands on product and UI UX. देखो, meant for each other. Yeah. Okay. Okay. Astha, tell me something. Your again you said कि आपका first एक second रुकना. या तो आपका फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो गया. व्हाट वाज योर रैंक अगेन? in UC, Yes. yeah, my category rank was 16. Okay. And you chose Guwahati. Yeah, I chose Guwahati. ठीक है. Have you been taking online classes अभी ऑफलाइन दे रहे हो? Online ही हो रही है, like from the beginning, because in Guwahati the situation is not good for COVID. It, like for a month it was fine. They called us, like went to the campus for a month only, but then also the classes were online only क्योंकि we were called on the voluntary basis only. But उसके बाद से तो the situation at the campus has not been good in case of COVID. Like अभी वाला जो wave आया है, वो तो इतना serious था कि that the campus has now converted into a containment zone now. No one can go in and no one can come out. So it's, Okay. So you're in Delhi right now? no, I'm at my home. Okay. अच्छा. So जैसे आपने अभी अभी आपने सुना होगा हर्ष के बारे में भी. हर्ष is discussing his experience as well. So he said कि उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें उसको थोड़ा MSQ समझने में, मतलब क्वेश्चन टाइप समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आई. Otherwise the paper was easy. How was the second attempt that you gave, the final attempt that you gave, how was your experience? The first attempt, मतलब UCEED का तो first ही दिया था आपने. How was your experience of the exam? The thing is, एग्जाम्स के साथ मैं मतलब एग्जाम्स को एक कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ कि यूसीड ऐसा निफ्ट मतलब निफ्ट में ऐसा होता है. किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले मतलब मेरे एक सर थे, लाइक इन 10th, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू कि कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हो तो सिलेबस पढ़ने से पहले पहले एग्जाम क्या है वो पढ़ लो. तो हम लोग लाइक ऐसे एक दो हफ्ता सिर्फ ये पढ़ते थे कि एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है. तो आई सजेस्ट कि इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम आता है, मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, इट्स बेटर कि यू जस्ट गो एंड फर्स्ट स्टडी कि व्हाट इज एग्जाम, उस एग्जाम में क्या आ रहा है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है, लास्ट टाइम क्या हुआ है, कैसे हुआ है. एंड बेस्ट थिंग टू डू दैट इज कोई भी लास्ट 5 years भी छोड़ो, आप तीन साल के भी पेपर उठा के देख लोगे, इट इज मोर देन एनफ टू नो कि व्हाट इज एग्जाम अबाउट. तो मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में मेन दिक्कत बस इतनी आई थी was for the drawing part, क्योंकि मेरे टाइम पे इट was the first time कि यूसीड में ड्राइंग क्वेश्चन आ रहा था. तो मतलब मैंने सब तैयारी करी थी, सब कुछ था, सब कुछ आता था मेरे को अच्छे से, बट वहां पे कुछ गड़बड़ हुई थी, मेरी पेंसिल के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो चल नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था उसके साथ. तो मैं वहीं पे होपलेस हो गई. एंड इट वाज अ सिंपल 1 point पर्सपेक्टिव क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो था. मैंने सिर्फ उस पेंसिल की गड़बड़ की वजह से वो पूरा क्वेश्चन मैंने खराब करके आई थी मैं. तो द थिंग इज कि अगर हो भी रहा है तो मतलब ऐसे होपलेस नहीं होना है. दिमाग बिल्कुल वहीं पे रखना है कि हाँ हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डरावनी चीज नहीं है, हो जाएगा. क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस ऑब्वियसली प्रिपरेशन के थ्रू यू मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस एंड ऑल. तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद इट. तो जैसे प्रैक्टिस में देते हो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी दो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. और बाकी हमें पता होता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है. जैसे मेरे वाले केस में इट वाज रीजनिंग, आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद इट. और जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हम उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल लेते हैं टू सेव आवर टाइम. तो जैसे मेरे लिए रीजनिंग था, तो मतलब रीजनिंग में मेरे पास इतने लूप होल्स थे कि मैंने बहुत सारा टाइम वहाँ पे सेव कर लिया था. तो ट्राई डूइंग दैट कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसमें से थोड़ा सा टाइम यू कुड सेव. और अब
एक ना यूसीड में एक यूसीड के पैटर्न में एक बहुत होता है कि हमें लगेगा कि क्वेश्चन इज फॉर रीजनिंग, और हम लोग क्या करेंगे, दिमाग उस पर टाइम वेस्ट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, बट एक्चुअली दोज आर फैक्चुअल क्वेश्चन। तो अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। वो है ही वो 2 क्वेश्चन, वो डाले ही क्वेश्चन पेपर में टू वेस्ट योर टाइम, तो जस्ट लीव इट। या दैट्स इट। या आई थिंक हर्ष ने भी ये पॉइंट नोट बोला था कि डोंट वेस्ट और डोंट गिव अ लॉट ऑफ योर टाइम टू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ यू थिंक दैट यू डोंट नो द आंसर, स्किप इट, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि एंड हमेशा क्वेश्चन ना सॉल्व करने के लिए नहीं, और स्पेशली आईआईटीज हैव दिस रिकॉर्ड, लाइक जेई, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स जेई वाले भी हैं, एडवांस एंड ऑल वाले, आईआईटीज हैव दिस रिकॉर्ड कि वो 2 क्वेश्चंस डालेंगे ही इसलिए कि वो आपका टाइम वेस्ट कर सके। तो जस्ट लीव क्वेश्चंस, दोज आर नॉट meant to be solving, just leave those questions. सो एक तो ये हो गया कि यू नो प्रायोरिटाइज एंड प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स बेसिकली Yeah. एंड प्रैक्टिस। एक अगेन वन थिंग वाज स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जाम। जो वो गड़बड़ हो गई 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाले स्टूडेंट, देखो हाँ, किसी के साथ भी सिचुएशन लाइक दिस कैन हैपन, yeah. and a lot of other situations can also happen. You can get anxiety, you can feel something in your stomach during the examination, things like that happen, physical manifestation of anxiety. But at the same time, you must consider this exam as just another exam. कोई बात नहीं, जैसा जा रहा है, you prepared your best, you Exactly. gave your best. And I think both with Harsh and with Astha, the situation was like they were very dedicated towards UCEED and they wanted to clear that exam, so they prepared strategically and then they gave the exam for everybody. I think Harsh, आप crash course में थे कि full time आए थे? I was in crash course, yeah. And Astha was also in crash course, so both Right. of, तो जो अगर जो सोच रहे हैं ना क्रैश कोर्स में सिलेबस, अब देखो ये अगेन ये बात भी होती है, देयर इज नो सेट सिलेबस फॉर यूसी और सीड। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि ये टॉपिक में से ही क्वेश्चन आएगा, ये 10 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन है, इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। यूसीड एंड सीड डज नॉट वर्क लाइक दैट। इट इज अ वेरी लॉजिकल एग्जाम, and especially the design, the art question, the creative questions that are asked are also very idea based. So again, practice जो कर रहे हो, you keep practicing. Don't just focus on the technical aspect. Drawing का भी एक aspect है जिस पे focus करना है, वो भी करना है अभी से. Astha's was the first time when the drawing question was asked, but this is not the first time. उसके पहले आस्था के पहले से डिजाइन ड्राइंग का क्वेश्चन आता ही नहीं था, but now they have started including that as well. So that is there now. Your technical questions are there. So like you, a lot of other students will also be there जिनको MSQ नहीं solve करना आ रहा होगा, या कोई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना आ रहा होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं सॉल्व करना आ रहा होगा. बट you do what you know. Don't overthink it. Read the questions a couple of times before attempting it, because आधा तो आपको समझ ही नहीं आता, and then comprehension में प्रॉब्लम हो जाता है क्वेश्चन के. So like Astha also mentioned कि कोई रीजनिंग का क्वेश्चन था, वो फैक्चुअल क्वेश्चन था, and you thought रीजनिंग का है, right? Yeah. One more thing is that कि कभी-कभी क्या होता है ना, when we are solving the question, तो हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन ना बार-बार रिपीट हो रहा है. बट द थिंग इज कि हम जब प्रिपेयर करते हैं, सो वी डोंट, हम लोग उस क्वेश्चन को स्टडी नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज ऑब्वियस. तो जस्ट मतलब मेरा ये तरीका था कि अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो मैं ज्यादा उस क्वेश्चन की डेप्थ में नहीं जाती थी, बस इतना देख लेती थी कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, प्लस उसके आसपास के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, एंड इट रियली हेल्प्स यू लॉट, क्योंकि वो कुछ नहीं करते, वो ज्यादा कुछ नहीं करते, वो थोड़ा बहुत चेंज करके वो क्वेश्चन डाल दे रहे हैं. इफ दे आर रिपीटिंग तो आना जरूर है वो क्वेश्चन, बट ये है कि सेम नहीं आएगा. तो जस्ट लुक एट कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, और थोड़ा सा आसपास का देख लो उसका. ऐसा नहीं है कि तुम पूरा ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ के जा रहे हो. जस्ट लुक ओवर कि वो क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से हो रहा है, एंड मोर देन इनफ, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू. ठीक है. Now the next question that I have is for both Harsh and you. Since the exam is tomorrow, and abhi to I personally don't suggest anybody to do last minute anything. Yeah. Cramming वगैरह Yeah. मैं नहीं suggest करती हूँ. Yeah. But what would your one major tip would be कि अब क्या करना चाहिए? ये जो 7 hours 8 hours इनके पास बाकी हैं, sleep apart from their sleep,
7-8 आवर्स भी नहीं है, 5-4 आवर्स अवेलेबल है उनके पास. So एक तो मेरे को लगता है कि बच्चे सोएंगे भी नहीं आज रात को, जिनको शायद ये प्रॉब्लम भी आए. फ्रेंड्स के But पास चलो तो what would you suggest? बातें बनाओ. तो जस्ट कॉल योर फ्रेंड्स और जितनी बातें बनानी है बातें करो, चिल करो. एग्जाम भूल जाओ कि कल एग्जाम है, चिल करो एकदम. मतलब मैं तो यही करती थी क्योंकि मुझे पता है मैं सो नहीं पाऊंगी, मूवीज देखूंगी तो टायर्ड हो जाऊंगी. सो आई जस्ट कॉल माय फ्रेंड्स. उनसे मतलब इधर उधर की बातें, पुरानी मेमोरीज, कुछ नहीं. अब फैमिली के साथ जाके मतलब देख लो, अगर मम्मी पापा ये ना बोल रहे हो कि कल पेपर है, पढ़ना है, तो फिर तो दूर रहना. फिर चिल करो अपने रूम में. बाकी तो हाँ, चिल करो, कोई पेपर का कुछ टेंशन नहीं लेना है. मतलब मैं क्या करती थी, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें बना रही थी. एक दिन पहले मैंने छोड़ दिया था सब कुछ कि अब तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती. तो यार चिल करो. What about you, what Harsh? what I did was I had this notebook in which I had like noted all the questions or anything what I'm seeing, like ye aayega hi aayega, something related to art, something related to dance form, just headings kind of thing. And what I did was I just at 5 or 6 p.m. like in night, something like I just had this notebook. Okay, cool. Just revise it and then I just throw it away. Bas, ab nahi, ab ho gaya. And then I had this like admit card ready, with like proper on table, each and everything, my box with like one pencil. I didn't had like too much of stationery, just the one my small pencil color case, and then sharpener, eraser, and sort of things. That's it. And then yeah, next day was exam. Just I met my friends and then we went. Like in Delhi, it was very chill. That time I was like, oh God, kaise karu attempt? But yeah. Then in when the paper came, like I got shocked. Oh God, ye kya paper de diya hai? It was like quite tough, but then yeah, it moves on with flow. Yeah. So right now is the time to chill. To be honest, like I agreed with Asta. Like it's the time to chill. Don't panic at all. Like don't do over study or whatever you are doing right now. Just stop it and just chill with your family, chill with your friends. Just talk with them like normal. That's all. It works. ठीक है. As Harsh mentioned, stationery का 2 बार हर्ष ने mention किया. उसके regarding भी I want to say कि क्या होता है कि ये बहुत simple चीज है, but at the end of the day you are cramming, or no, not cramming, you are cluttering your space, and you need to declutter both your mind and physical space during the examination. When you go, just minimize the process, keep as less distractions as possible. Now I think we will open the conversation. One thing I wanted to say, yeah, so one more thing you can do is like just clean your study space. It will help. Like just reorganize your study with जितने notes हैं सब छुपा के रख दो और अच्छे से उन्हें मतलब टेबल अच्छे से रख दो. मतलब नहीं पता, लिटरली इट हेल्प्स. मेरे को भी हेल्प करती है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को भी हेल्प करती है कि एकदम से ना एंग्जाइटी आने लगती है. तो व्हाट वी डू इज वी जस्ट रीऑर्गेनाइज आवर रूम्स और अपनी टेबल को अच्छे से साफ करके अच्छे से रख लेते हैं, बुक्स अच्छे से लगा देते हैं, क्लीन कर दो, मतलब मम्मी को खुश कर दो आज बिल्कुल. तो it genuinely reduces your anxiety a lot. Just reorganize it. Agreed. I think the paper gonna be totally different more in next mornings. I'm just telling you, like, and whatever you have studied an observation. To be honest, you have developed that observation to solve the question, and the paper gonna be like very Like, changed now. like UC के लिए no one can prepare you. It's like कि बच्चे आपने जितना भी पढ़ा है, जितने भी observation है, एक साथ बस that paper is testing that. Right. Yeah. Okay. I am opening up the discussion to students. You can raise your hand one by one, and till the time you are asked to. There was a question by someone like for how many months I've started preparing seriously for the exam. So to answer that, like पढ़ाई तो मतलब थोड़ी बहुत हम लोग करते ही रहते. Like you have to be consistent. ऐसे एकदम नहीं छोड़ सकते. But एक even for 30 days, if you are consistent and you are really dedicated, so a month of serious study is more than enough. But उसे 1 महीने you have to really कि हाँ इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. So a month is more than enough. That's great.
Does anybody have questions? You can write it in the chat box. I'll read them and answer, discuss it with Astha and Harsh. Both of them can see the chat box. Direct मत करना मेरे को. Maths formulas. So maths मेरे ख्याल से UC में maths as such नहीं आती है. Like there is more of reasoning. और रीजनिंग की अगर प्रैक्टिस की होगी सो देयर आर मतलब ट्रिक्स होती हैं, जैसे तो डिकोडिंग होती है. यू शुड लाइक फॉर सेविंग टाइम यू शुड नो कि हर लेटर का कौन सा नंबर होता है. लाइक जब मैंने प्रिपेयर किया था सो आई रिमेम्बर्ड कि अल्फाबेट्स मैंने स्ट्रेट ऑर्डर में भी याद किए थे और उसमें भी याद किए थे, रिवर्स में भी किए थे. सो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत टाइम सेविंग होती है. और फॉर्मूलाज एज सच कुछ नहीं होते, देयर आर जस्ट ट्रिक्स जो हम प्रैक्टिस करते करते डेवलप कर लेते हैं खुद ही. सो इफ यू आर प्रैक्टिस एनफ सो यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एनी फॉर्मूला. मुझे लगता नहीं है कि यूसीड में, मतलब मुझे नहीं याद कि आई गेस मैथ का शायद ही कोई बिल्कुल ऐसे मैथ का कोई क्वेश्चन था. लाइक बेसिक मैथ का होगा, उतने फॉर्मूलाज तो आई गेस वी नो सिंपल मैथ होगी, लाइक यूनिटरी मेथड एंड ऑल. GK, to be very honest, I am really bad at GK. मैंने छोड़ दिया था वो. थोड़ा बहुत जितना याद था उतना करके आ गई थी, बाकी I just left it. Guys, feel free to ask questions. Arav Dikshit. Yes, Arav. Go ahead. Do we have Arav here? Guys, you can like अपनी वीडियो ऑन करके you can ask us directly. प्रखर आप पूछो क्वेश्चन. प्रखर माइक भी ऑफ करो, ऑन करो. आई मीन म्यूट है. अच्छा. So you can Hi, मतलब तुम लोग good evening, ma'am. think. Hello. या गुड इवनिंग. वो भी आस्था भी गुड इवनिंग बोल रही है. अच्छा, शी इज नॉट यूज्ड टू बी कॉल्ड मैम. मैं तो गुड इवनिंग तो आपको बोल रहा था. अच्छा है गुड इवनिंग. हाँ उसको भी बोल दो, कोई बात नहीं. गुड इवनिंग. हाँ जी. तो हमें ये क्वेश्चन था कि यूसीड जैसे 300 मार्क्स का पेपर है अभी ये, दैन 60 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है जैसे ड्राइंग का. अभी एक या दो क्वेश्चन जो भी आते हैं. सो मेरे को ये कंफर्म है टाइम कितना देना है उस पे ड्राइंग पार्ट पे. मतलब ड्राइंग की स्केचिंग पार्ट में कितना टाइम देना चाहिए? it depends, it completely depends on you. What is your speed of sketching? Like मेरा था कि मैं 2.5 hours में अपना पूरा पेपर देना, मेरे को आधा घंटा उसे डिवोट करना है स्केचिंग पार्ट को. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हारी स्पीड कैसी है, तुम कितनी देर में पेपर कर रहे हो. लाइक प्रैक्टिस डिड यू मस्ट हैव प्रैक्टिस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, राइट? या तो सेक्शन बी में कितना टाइम लगा था? लाइक डिड यू सेट एनी लिमिट व्हाइल? मैं लाइक 2 hours 15 minutes में सेक्शन एक कंप्लीट हो जाता है. इट्स वेरी, मतलब ये बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है कि अगर 2 hour 15 minutes में हो जाता है तो इट्स गुड कि तुम्हारे पास 15 minutes बफर है. तो देख लो, मतलब स्केचिंग इफ यू कुड, मैंने अपने लिए हाफ एन आवर रखा था, लाइक कि आधे घंटे में मेरे को करना है किसी भी तरह. और लाइक ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें स्केचिंग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ऐसा कुछ यूसीड में जैसे जरूरत नहीं है ना, ऐसा अच्छा दिखना चाहिए कि हाँ प्रोपोर्शंस करेक्ट होने चाहिए एंड ऑल. यूसीड में यूसीड में जितना मुझे पता है दे लुक ओवर योर टेक्निकल स्टफ, क्योंकि द पीपल हु आर चेकिंग दे आर मोर इनटू कि आपका आइडिएशन कितना अच्छा है, आपका
व्यू कितना अच्छा है, वो लोग ये थोड़ा देखते हैं. सो लाइक जैसे मेरा कॉम्पोजिशन का अगर क्वेश्चन है तो उसमें मेरा फेस अगर बनाने, तो ऐसा तो नहीं है जैसे लाइक फाइन आर्ट्स में होता है कि फेस बनाने प्रॉपर एंड और सो मतलब ऐसा नहीं है ना, मतलब बेसिक स्केचिंग विद मतलब थोड़ा अच्छे प्रोपोर्शंस और उसके साथ हो सकता है. प्रोपोर्शन का ध्यान रखना कि मतलब वो मेन टेक्निकल चीज ज्यादा देखेंगे कि यू आर मेकिंग अ ह्यूमन बॉडी, तो योर रेशियो टू हैंड और वो सब थोड़ा ठीक होना चाहिए. बाकी उतना कुछ नहीं है कि बिल्कुल बहुत अच्छा पेंटिंग बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है. एंड कलरिंग उतनी रिक्वायर्ड भी नहीं है लाइक कि कलरिंग वो करनी है. वो तो क्वेश्चन में मेंशन होगी ना, लाइक नहीं जो लाइक हमें रिसेंटली जो मैसेज मिला है उसमें लिखा हुआ है कि कलर्स आर नॉट शुड नॉट. नॉट बी यूज्ड. हाँ, सो जस्ट डोंट यूज, लाइक इसमें मतलब कंफ्यूजन इतना, मतलब इतना वो मत इतना वो होने की जरूरत है. जस्ट डू वॉट एवर दे आर सेइंग. कलर्स नहीं है तो जस्ट लीव इट. ऑब्वियसली यू वोंट बी यूजिंग कलर्स. क्वेश्चन में मेंशन है, सो यूज इट. थैंक यू. This is another question by Surbhi कि 11th 12th का मैथ्स कितना आता है, रिक्वायर्ड होता है? बिल्कुल भी नहीं. नहीं, 11th 12th इज लाइक बहुत ज्यादा है, मतलब सब लोग दे रहे हैं वो पेपर. लाइक यू मस्ट हैव सीन कि पीस बायो का स्टूडेंट भी दे रहा है वो एग्जाम. तो नो, 11th 12th मैथ्स इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके. श्रेया, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? श्रेया, आर यू देयर? Just a second. I have Shreya's question here. Okay. Is it allowed to attempt section B even before 2.5 hours are complete, or can we only start after 2.5 hours? And will section 1 be submitted after 2.1 hours, 2.5 hours? सी आई डोंट नो दैट कि वो लोग कैसे क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट करेंगे. अगर इट इज मतलब उन लोगों से पूछ लेना, और उसमें वैसे इंस्ट्रक्शंस अगर पढ़ोगे, इफ दे आर अलाउइंग यू कि तुम लोग वापस जा सकते हो टू द सेक्शन ए सेक्शन बी, जो मुझे लगता है कि दे अलाउ, तो यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट एज यू विश, जिस भी तरीके से करना है. बट एक बार देख लेना कि इफ दे आर अलाउइंग यू टू गो बैक. लाइक शायद मेरे टाइम में दे डिडंट अलाउड टू गो बैक. आई हैव टू अटेम्प्ट इट इन हाफ एन आवर ओनली, जितना मुझे याद है. तो just look over कि pattern क्या है. If they are allowing you, so you can go back. Okay. Okay. एक क्वेश्चन और है हर्षिता का. एक सेकंड. Tanjal, I'll come back to you. Just give me 1 minute. Harshita is asking, should we or can we? I think it should be can we. Can we use scale in part B? Did they allow you to like take मतलब scale is I think don't use scale. don't use scale. Yeah. Maybe Do not use scale. Like for CEED or UCEED, don't use scale. These IIT people don't require this thing. Like you just have to, make it with your pencil and your और skill set. पता है मतलब स्केल यूज करना will be a disadvantage, क्योंकि स्केल it will consume your time. जितना फास्ट हाथ से ड्रॉ होता है ना, उतना स्केल will consume your time. So even I suggest कि स्केल मत यूज करो. Okay. I'm unmuting you, Tanjal. You can ask a question now. Hello. Am I Yes. audible? Yeah. Yes, you're. So my question is for Seed. So as you talked about the presentation, how can we improve the overall presentation of our paper? Because I know how to solve and how to give the answer, but how to present it well, and specifically for the problem identification question, where they ask us to illustrate the problems, 3 or 5 problems. So how to improve the presentation there? Right. So what you can do is just quickly do your rough sketches on the left side, where they provide you with a rough paper, blank paper, and just scribble it like in small square. And when go with the like you're okay with the idea, then you just have to draw it like a square with your hand. Don't use scale. And in that square, like if they have given the square, then only you can put your storyboard, something like that, or the illustration, and then just write whatever you have made. Like this is particular illustration I've made. It shows like this is a concept or something like that. Just write it in a good manner so that it is visible,
and I can read it, that it is written in like you have written particular words, like it is looking like a the, or it is looking like this kind of thing. So it has to be clear. That's it. And yeah, I think normal sketching works. For that answer particular, like last year there came this basin something, now wash basin, COVID thing came for the last time. So I did that only. I hope you're clear. Okay. So yeah, uh, we can write also, we can put text also in the problem identification one. Definitely you can, definitely, but just be clear and don't use too much of sentence, don't use over going with the paper, or just whatever the page layout is, like just use it with the good advantage. That's it. So like Okay. normal sentence, like one liner you can put, it is best. Yeah. And for the icons, the question with Yeah. the icons, Yeah. do we go like do we need to color them, or can we just No, go no, with no, no. solid drawings? No, don't color it. I use 8B. So they have written black color. I still got confused. So I don't want to take the chance. Then I had this 8B pencil, and with the 8B, like with the mechanical pencil, I just made the small shape, and then with the 8B, I had this like finishing and everything, whole black. I think Yeah. CEED allows us to use black pen also for that purpose. I'm not sure about that, but it's totally up to you. If it's written over there, then use it, or else I don't want to take the chance last year. So Yeah. I use pen, because whatever you're using, your concept has to be clear. It doesn't have to be like a Pablo Picasso painting or something like very fine or something. Yeah, you just have to put it in a very right manner. That's it. That's it. And use pencil, I would say, to be on a safer side. And whether they have written something like a black color or something, then use your micron pen or whatever. Yeah. Otherwise, don't use it. Okay, thank you. Okay. Dinesh is there. Yeah. Yeah, Dinesh, go ahead. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you're audible. Yes, ma'am. Basically, I have two questions. The first question is, if we don't have any idea in the GAD part or in the drawing part, like how we get the inspiration, ma'am? How we can get the, apart from the nature part, if the industrial part. So how we can get So the he's inspiration? asking basically, हाँ, अगर inspiration नहीं आ रहा, creative block आ रहा है, तो कैसे उसको deal करें? आस्था और हर्ष को creative block आ गया अभी. I think अगर कुछ ऐसा समझ नहीं आता है, because yeah, it happens with us also. कुछ नहीं समझ आता, then you can go with like a basic thing, because time वहाँ पे है, you have to cover it your time, and you have to put something over there rather than putting nothing. है ना वही, तो you have to put something now over there. You can't just blank it out or leave it like that. Like I remember asking the same question to sir when I was preparing कि sir क्या होता है, तो sir ने फिर what you can do is just like her said, just start drawing anything. कहीं से भी कुछ तो draw करना शुरू करो and you realize अपने आप थोड़ा थोड़ा आ जाता है like. और अगर ये भी लग रहा है कि you would be wasting the page or something, so just do एक little corner में box बना के थोड़ा थोड़ा draw करना चाहिए. हाँ, यहाँ पे ये डाल दे रहे हैं, यहाँ पे ये डाल दे रहे हैं. और this और I guess someone asked me a question कि how to draw faster. So इसका भी सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले एक छोटे से एरिया में just decide कि what you need to draw. और जब आपके दिमाग में clear idea होता है ना कि हमें ये draw करना है, तो speed अपने आप आती है. और मुझे लगता है जब while in the class हम लोग इतनी स्केचिंग कर चुके होते हैं कि अब हमारे स्ट्रोक्स और वो सब अपने आप स्मूथ हो चुके होते हैं, तो स्पीड अपने आप आती है. वो बस स्पीड कम वहां पड़ती है जब when you are unclear with your thoughts कि क्या ड्रॉ करना है, क्या नहीं ड्रॉ करना. तो जस्ट पहले डिसाइड कर लो कि ये ड्रॉ करना है, स्पीड अपने आप आ जाएगी. Okay, Dinesh, is the answer, is it clear to you now? Ma'am, I have another Yeah. Ma'am, in the exam, which part we have to start with, like in the selected one or MCQs one, in the numeric one?
it completely depends on you, like while practicing या while preparing, मतलब ये किसी को हम बता नहीं सकते कि इससे शुरू करो या इससे शुरू करो, हर किसी का अलग होता है, मतलब it's just my opinion. तो जस्ट लुक, मतलब प्रैक्टिस करते करते यू मस्ट हैव लाइक सीन कि हाँ मैं अगर ये सेक्शन शुरू इस सेक्शन से शुरू कर रहा हूँ तो मेरा पेपर अच्छा जा रहा है, इस सेक्शन से शुरू कर रहा हूँ तो मेरा पेपर अच्छा नहीं जा रहा, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि कहाँ से बेटर रहेगा और कहाँ से नहीं. Basically, start with a strong suit and then, go towards questions that you think you'll need a little more time to it. जिसमें यू कुड टाइम उसमें उससे पहले करके खत्म कर लो, दिस यू कैन डू. ठीक है. Ma'am, what kind of a question we can avoid, like except from the passage one? Again, I think it's totally up to you. If you think that this question requires a lot of energy and you think you're not clear with the concept, you can avoid it. For somebody like maybe Astha or Neha, or we all everything it could differ from person to person. Would you agree, Astha? Yeah, definitely. Like, for GK was my weakest part. So ऐसा मतलब आई यूज टू वाइड, अब मैं मतलब वहाँ पेपर में ऐसा तो है नहीं कि मतलब बिल्कुल मेरे को एकदम से पता चल जाएगा जीके का आंसर, तो जस्ट अवॉइड इट, उस पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है. Yeah, I agree. The same happened with me also in NAT, in starting of CEED, NAT numerical answer type. So I don't know, like I am not very much well versed with mathematical questions. So I just, I just remove them. Like, okay, let's not do this. Let's just move on with the next part. Then I had this MSQ and then MCQ. I was doing that only. And then like when the time was left, then I came back to them again. So like I was having like, if I can solve them. Yeah. So that part I utilized in that portion, but in the starting, whatever you know, just complete that first. Okay. I just want to add, as in like when Asta was saying ki ek chota sa, in your page, whatever drawing space that you have for the drawing question specifically, at the top of the page on the right side or the left side corner, make a small box and make a mock-up of whatever you're thinking of making. And like this, you will ideate faster and then put it on, then fare it out by making the full-blown version of it. Like and if you are Harsh itself said that कि पेज का utilization अच्छे से करो. तो yeah, I said that like in CEED paper, you get a blank paper on the left side for the question. So you can, so I was also doing that, making a quick thumbnail, small kind of illustration, quick thumbnail. And from that, I get this idea, okay, I have to make this particular toothbrush or something like that. Okay, let's put it now, final kar do. So yeah, like that one can utilize their time and strategize the overall paper. Yeah, and I think in terms of idea that if you're facing a creative block, in questions like that, either you get inspiration or you don't. So if you're not getting inspiration, so make something or the other to, just either you can take some product or some, some concept ka inspiration and try and see if that can be put in that particular question. If not, then make whatever some basic drawing and just do with the question. Itna, वही again आपके पास time इतना नहीं होता कि आप you spend 15-20 minutes thinking कि क्या idea बनाए. अभी तो you have, while practicing, you have a lot of time with you कि अभी सोचते हैं, उसके बाद इंटरनेट से देखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, फिर बनाते हैं. उधर जाके ये नहीं मिलेगा आपको, this particular luxury. Arav is asking, is there any extra time in UCEED? That one is what I told you कि मैं जैसे मेरा strongest part was reasoning, तो I literally find loopholes उसमें कि मैं किस तरीके से मतलब इसमें टाइम बचा सकती हूँ, इसमें टाइम बचा सकती हूँ. तो इट कंप्लीट, बहुत लोगों का टाइम बच जाता है स्केचिंग में कि हाँ हम लोग स्केचिंग बहुत जल्द, तो वो अगर लोग आधा घंटा ले रहे हैं तो 20 मिनट्स में कर ले रहे हैं. तो yes, there is it completely depends on you. अगर तुम लोगों की टाइम मैनेजमेंट अच्छी है एंड मतलब प्रिपरेशन के टाइम यू हैव नोन कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है, तो या देयर इज डेफिनेटली टाइम बचता है, ऐसी कोई बात नहीं है. Okay, and Vaibhav is asking, can we use marker on computer screen for visual based questions?
No. Of course. No. Like I was thinking कि मुझे ऐसा करना चाहिए, but yeah, of course you can't do that. Someone was asking कि how much percentage of questions we can leave. So मेरे को भी याद नहीं है like इतने अच्छे से. It depends कि cut off Percentile, yeah. कट ऑफ कितनी आ रही है लाइक लास्ट टाइम से? डू यू रिमेम्बर लास्ट एग्जाम में कितनी थी I'll have कट to ऑफ? check. I'll check that. Meanwhile, you can answer another question that is there. What is minimum marks to get into IIT? हर बारी कट ऑफ अलग जाती है, करेक्ट? या हर बार ही अलग जाती है, बट नहीं इतनी ज्यादा अलग नहीं जाती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है मेरा. मेरे को ऐसे ना याद नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं उन लोगों का यू चेक. वो इतना याद नहीं आ रहा क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, बट आई गेस if you are मतलब seriously 60 to 70% पेपर कर रहे हो तो आई गेस it's more than enough to get into an IIT. So I am putting a link in the chat box for everybody. You can see the cutoff. It's easily available online. आप cutoff देख लो. But again cutoff देख के घबराना नहीं है कि अरे ये कैसे होगा, या इतना टेक्निकली नहीं. आपको जितना आपका बेस्ट करके परफॉर्म करके आओ उधर, and try and see how many what is your tentative score could be, what could be according to you. You can see this cutoff. I'm unmuting Ansh. Hi, I had a question. I was planning कि मैं जो NET का questions है, I'll leave them for later. So MSQ or MCQ, I'll finish them first because I think I'm stronger in those parts. But I was thinking कि can I start the sketching and go back to NET? Or is it necessary कि सिर्फ वो वाला portion मेरे को पहले complete करना है, फिर मैं sketching में जा सकता हूँ? Oh, okay. You're attempting for first time? Yes. Right. Yeah, CEED exam, right? No, UCEED. UCEED, okay. So that Yeah, only Astha will say. that only I told you कि it completely depends on the pattern. तो एग्जाम स्टार्ट करने के लिए ध्यान से लाइक डू रीड द इंस्ट्रक्शंस. कुछ एग्जाम्स में दे अलाउ टू गेट बैक, बट कुछ एग्जाम्स में दे डोंट. लाइक मेरे वाले पैटर्न में आई गेस उन लोगों ने 2 hour 30 minutes के बाद आई गेस हम लोगों का सबमिशन हो गया था. तो टू आस्क देम और रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली कि क्या पैटर्न है तुम लोगों का. अगर दे आर अलाउइंग यू तो डेफिनेटली जस्ट गो विद व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद. ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू. बट ट्राई नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इट. आप ये करो 2.5 आवर्स में आपको एक सेक्शन खत्म करना है, हाफ एन आवर में आपको एक सेक्शन ये कर लेके चलो. There could be changes when you go to the center. Basically what they're trying to say. मतलब कि अगर टाइम 30 मिनट्स का है तो जस्ट कीप कि तुम्हें 20-25 में खत्म करना है. ये नहीं कि 30 का है कि 30 में करोगे, तो उससे कम रखो. तो that will be much better for you. ठीक है. Dinesh, do you have any other question? Your hand is still raised. I'm asking you to unmute. But yeah, ma'am, I'm done. I'm clarified. Okay. Thank you, ma'am. There is. Someone also asked me कि she'll be giving exam in 2023. So what else? So just go through last year का question paper and see कि वो लोग किस तरीके के question पूछ रहे हैं. Especially in GK2, you will know कि GK भी किस पार्ट से आ रही है. तो मैंने जो GK का observation किया था, it was more over to Indian culture और dance forms और इन सब से आ रही थी. तो just do कि last year का question papers, if you are even picking up last year के three last year question papers, just go over कि वो किस तरीके के question पूछ रहे हैं. You will know कि तुम लोगों को क्या क्या prepare करना है अपने आप ही. तो yeah. तो इसके अलावा लाइक नॉन वर्बल और इन सब के अलावा just go through the question paper. You yourself know what you need to study. Real is asking whether we will be getting normal paper or drawing sheet for part B.
मेरे ख्याल से जिस तरीके का पेपर निफ्ट और नेट एनआईडी वगैरह में मिलता है उसी तरीके का आता है. इट इज अ थिक पेपर होता है ना ड्राइंग का, वैसा A4 शीट ही होती है, बट थोड़ी थोड़ी बेटर क्वालिटी की होती है. थिक प्रिंटर होती है, शीट ही मतलब होती है. क्वालिटी तो अच्छी ज्यादा नहीं होती है, बस थिक होती है कि आसानी से फटे ना, बट क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं होती है बस. जैसे मतलब अगर किसी ने निफ्ट और एनआईडी का एग्जाम पहले दिया है तो वैसी सी शीट आती है. ठीक है. सो द शीट इज बेसिकली योर A4 साइज प्रिंटर शीट ओनली, बट वो जो नॉर्मल प्रिंटर क्वालिटी पेपर होता है उससे थोड़ा थिक पेपर होता है. दैट्स द डिफरेंस. बट आपको कोई कार्ट्रिज शीट, स्पेशल शीट नहीं मिलेगी इस एग्जाम के लिए. नहीं. या एनीबडी एल्स? डू यू गाइस हैव क्वेश्चंस? Rashmi is asking, in part B, according to the cutoff, just a second. In part B, according to the cutoff, it is only 6 marks out of 60. So, like they don't give marks in part B, or I am understanding something wrong. Sorry, can you please repeat the question? Yeah, Rashmi, can you come on video and explain your question, what you are trying to ask? Rashmi Ray. Okay. Just a second. Ananya is asking, is there any break between part A and part B? Yes. No break. 3 hours मतलब 3 घंटा पेपर दो आराम से जैसे होता है. No break. But I guess you can scroll back to part B से part A. You can go back. मतलब वो तो साथ में ही होता है. You can't come from drawing to, मतलब मेरे वाला पैटर्न ये था कि मैं ड्राइंग अगर कर रही हूँ तो मैं वापस से पार्ट ए पार्ट बी नहीं कर सकती, बट पार्ट बी से आई कैन गो बैक टू पार्ट ए. तो ये चीज ना मतलब पढ़ लेना अच्छे से इंस्ट्रक्शंस की पैटर्न क्या है. Okay, Ansh wants to ask something. Ansh, Unmute. Yeah, sorry, I couldn't unmute myself again. So I think मेरा question is a little similar to what Rashmi asked. जो website पे लिखा हुआ है उसमें there are 6 marks given as a cutoff for section B. So even I had the same question. Do they not give marks in section B? Like if you get 6 marks out of 60, if the cutoff is that low? मतलब just repeat it once again. मतलब को थोड़ा नहीं, confuse I'll tell you. So Astha, what I just shared a link to them. Previous year के cutoff का. I'll share a proper link again क्योंकि I think there is some issue with the information that they mentioned. तो मेरे को समझ में आ रहा है इन certain exams ओवरऑल कट ऑफ के अलावा इंडिविजुअल सेक्शन में भी कट ऑफ होती है. Like I gave NTSC when I was in 10th. So जब मेरा रिजल्ट आया था I crossed the cut off and I was like कि मेरा पेपर क्लियर क्यों नहीं हुआ. तो इंडिविजुअल सेक्शन का कट ऑफ ये होता है कि आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के अलावा आपको इंडिविजुअल सेक्शंस का भी कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि अगर आपके पार्ट बी की अगर कट ऑफ इज 6 एंड यू आर गेटिंग 5 और बाकी पार्ट ए पार्ट सी में आपका बहुत अच्छा स्कोर है और टोटल मिला के आपका ओवरऑल कट ऑफ क्रॉस हो रहा है, बट अगर आपका पार्ट बी से 6 मार्क्स से कम हुआ so you will be not qualified. You need to qualify individual sections too. So that Okay. what it means. Okay. Also, उसमें जो part A का cut off था, is it 80% or is it 80 marks out of 240? Marks. It should be 80 Okay. marks. Yeah. Okay. Okay. Thank you. यूजुअली पता है क्या होता है, ये कट ऑफ इतनी लो इसलिए भी जाती है क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है. यू हैव टू रिमेंबर दैट एज वेल. एंड द अगेन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एज क्लूलेस एज यू. तो ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ आता है, तो इसलिए घबराना नहीं है कट ऑफ देख के भी. देयर इज समबडी आस्किंग. अच्छा, इसका मैं आंसर मैं दे देती हूँ
can we carry writing board to the exam? For any technical question ऐसा कि मैम ये कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, I request you all to please read your admit card का first page पे lower half, उस पे clear instructions लिखी हैं. जैसे for example for B design UCEED के लिए लिखा है कि कोई colors कुछ allowed नहीं है, extra material कुछ allowed नहीं है, only pencil. Right. I think pencils, sharpener and eraser you can take, but for CEED you have to take colors, bring your own colors. So इस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड पे दी हुई है. डोंट फॉरगेट योर आईडी प्रूफ, डोंट फॉरगेट योर एडमिट कार्ड, प्लीज ये सब चीजें लेके जाना. कोविड का जो डिक्लेरेशन है वो भी लेके जाना है, इट्स मैंडेटरी. देन रिगार्डिंग द राइटिंग बोर्ड, उसमें लिखा है कि यू कैन कैरी अ राइटिंग बोर्ड विद यू. इट्स नॉट लाइक अ मस्ट, you can carry a writing board. क्या है? clipboard होता है जिसके ऊपर रखकर पेज पे आंसर लिखते हो, ठीक है. एंड क्लियर बैग में आपको स्टेशनरी कैरी करनी है अपनी. हर्ष, एक तंजल पूछ रही है सीड कट ऑफ का भी बता दो उसको. ओके, क्या पूछना है उसको एग्जैक्टली? सीड का कट ऑफ कितना जाता है, कैसा जाता है, how it is, how the marking is like. उसने बहुत vague question पूछा है. Please brief about seed cutoff as well. See, it depends on year to year, and like in my case, the paper was quite tough, so the cutoff was somewhere around very less, like 22. I don't remember exactly, but it was very less. Like for part A. So in CEED, what happens is you have to clear the part A first, and then with the cutoff and all, then your copies will be checked for part B. So then you will have an overall rank, which will be given to you, and from that you'll be given everything, like all the details about the scorecard and stuff. But for the cutoff, like in my case, it was like somewhere around 22 or something. Yeah. So you have to clear it. So you're if you're giving the paper this year, then just have this in mind, like you have to score something good than that, like 20 or 22. It's according to the paper. Then if it's coming very easy, then the cutoff can go around like 40 also, 45 also. So yeah, so it is based on the like part A stuff. I think cutoff is not at all important. It's totally not at all important. You have to prepare really good, and I think you have prepared really good for the exam tomorrow. So just chill karo and just give your exam with like open mind. That's all. Yeah. ठीक है. I think we'll take one last question. Mahi has a question, and then we will wrap this up. अब मैसेज कर रहे हैं लोग, ठीक है. क्वेश्चंस पूछ लो एक ही बारी आप चैट बॉक्स पे सारे. So Mahi is asking, can you please give some tips to draw storyboarding questions quick for CEED? Okay. So okay. I think whatever the story is there, just I'll just tell you one thing, like just make a quick thumbnail on the blank page you have been given. Just make a quick thumbnail on that and put your keywords, like one story has to be there. It has to start from this thing, and there will be some climax or like that. And I think there will be 6 to 7 boxes only, and there will be no more. Like in that only you have to put it with some text or something like that. And yeah, you can use some dialogues also, and you can put some shadings behind that, so it looks thoda catchy, and it should look clear. First of all, it should look clear. Don't overburden with too many elements and all. If you're using characters, then just use the characters, and at the back just show some background, like a little bit. That's it. That works then. Yeah. ठीक है. Dinesh is asking, Dinesh, please specify पहले तो आप मास्टर्स के लिए हो कि बैचलर्स के लिए हो, because इसका आंसर वेरी करेगा. तो Dinesh is asking color pencils allowed है कि नहीं. Can you please specify? Are you for master? If you are for bachelors, you can't take colors. If you are for masters, it's written that you can take colors on that in the admit card. So please refer to your admit card for any technical questions like this. UCEED you can't take pencil colors. Colors allowed नहीं है UCEED में इस बारी. तो आप अपना please admit card का नीचे read up your admit card and then decide what you can or cannot take. और कलर्स का भी आई गेस ये होता है, इफ यू आर कंफ्यूज्ड इनकी कौन से चॉइस ऑफ कलर्स ले जाने, जस्ट चूज दैट मीडियम जो मतलब तुम्हारे पेज को ruin ना करे. एंड बेस्ट आई गेस आर द पेंसिल कलर्स इन दैट केस, क्योंकि बाकी सारे मीडियम्स दे मतलब पेपर खराब कर देते हैं वो लोग जल्दी.
To be honest, there is no time to carry your poster, watercolor, whatever. Only pencil colors are the best. If you really want to use it, just use it. Only the pencil color. And rest, the best thing is the pencils. Your 6B pencil, maybe 2B or something, but whatever you're good in shading or something, you can use that and just finish it off. In my case, I didn't use any color for the CEED exam. I just used it all my 6B, 8B, 3B kind of. Yeah. I completed with them. Quite simple. मतलब इतना confusion होने की वो नहीं है. Just मतलब Right. इतना सोचा मत करो. They have said so just वो simple statements होते हैं कि नहीं use करना मतलब नहीं उसमें इतना issue वो confuse होने की जरूरत ही नहीं है. It's simple. They're quite simple. Instructions होते हैं, just follow them straightforward. Right. I am just reading out this one particular point from the UCEED admit card for everybody who's here appearing for UCEED tomorrow. The point number 6, drawing materials के regarding information दिया उन्होंने. Candidates must bring their own pencils in a transparent packet. Sketch pens, poster colors, and other coloring material is not needed in the exam. Not capitals में दिया हुआ, which means that you don't need to bring colors with you for UCEED. Also, you may bring a writing board of A4 size. Exchanging and borrowing of these materials is not permitted inside the examination halls. और इसी यही same point में I think CEED वाले में लिखा है admit card में that you can and should bring colors. So ये difference है एक आपका, तो मत लेके जाओ unnecessary material. वो ऐसे ही confiscate हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है उसकी. If anybody has any questions, I'm giving 1 minute. पूछ लो. बाकी I want Astha and Harsh to also return back to their studies. Yeah, their assignments वगैरह. If you have any questions, you can ask. Otherwise, we will wrap this session up. Anybody? देखो bottom line आस्था और हर्ष का यही है. चिल करो भी जितने आज हैं. Relax करो. Yeah, totally. Yeah, totally. But best thing is friends को all कर लो. Best thing. एक बार ही फिर भी बोल सकते हैं कि कल पेपर है, देख ले कुछ और ये वो. Just stay with your friends. और नहीं तो फिर खुद अपना कुछ read कर लो, doodling कर लो. Best thing है. Doodle, scribble, some stuff. And just keep all your things ready, like admit card and other stationery stuff. Yeah. Right. ठीक है then. Thanks a lot. A huge thanks to both of you. I mean, मेरे को लग नहीं रहा था this you would have time for this. But again, thank you Harsh and thank you Astha for being here. इनके doubts clear करने के लिए and inspiring them a little to even clear UCEED and CEED both. Thanks a lot. Thank you Neha ma'am for being here. Co-hosting the session. One I just want to add कि IIT बहुत बड़ा हुआ नहीं है. Like लोगों ने बना रखा है. It's just an exam यार. जैसे 2 target नहीं है. मतलब पहले या होता है तो भी ठीक. या totally होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक. तुम लोग कहीं भी जाओगे ना, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, it completely depends on you कि तुम्हारे पास उस समय क्या है और तुम उससे क्या कर रहे हो. फिर चाहे तुम IIT चले जाओ, अगर तुम नहीं कर सकते तो IIT भी तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा. It's completely depends on you. ठीक है. Thank you so much. Thank you so much, Harsh. Thank you, ma'am. You. Thank you, ma'am. Thank you, Shmeet ma'am, for calling us. Yeah. Thank you for being here. All right, take care both of you. Yeah. You too, ma'am. Update देते रहो मेरे को. क्या चल रहा है? Surely. All right, great. Thanks a lot. Thank you. Bye.